this rainstorm, this August day song. Road that has led to the dream destinations of man, building a bond of beautiful relations in the history of humanity and civilization. The developments open up the road of India's northeast due to its geographical proximity and locational advantage in linking Southeast Asian countries through road, railways, air and waterways. With the growth of regional trading based on resource, production and demand structures across the border areas are economic corridors. Border trade as a strategic tool for economic development in the era of globalization, economic liberalization and regional cooperation. Major items exported out to Bangladesh through the northeastern border points are oranges, pineapples, jackfruits, potatoes, ginger, clothes, and other daily necessities of daily life. The border trade agreement between India and Bangladesh was signed in 1972 to meet day-to-day requirements of the border people. Karimganj, Steamer Ghat in Assam are other border trading points where both primary and manufactured goods are traded through these border points. Sitting by the calm flowing river Kushiara
It was indeed a great feeling to see the relation growing, exporting and importing of goods that takes place here daily. The water transportation is the cheapest and the easiest means, which gives a fillip to the movement of heavy cargo like coal, cement, limestone and other agricultural product in high tonnage. The mighty river Brahmaputra, having declared as a national waterway carrying people and goods as far as South Bangladesh to the mainland India, this further gave access to the seaports of Chittagong in Bangladesh. That transition took place since ages. The ever-flowing river Kushiara has been witnessing the growth of this beautiful bond. The calm-flowing river Kushiara has seen many a arrival and departure of man with tears of joy and sorrow. अब इतना अच्छा बात बोल रहे हैं, जो भी हो, नमस्ते, सलाम अलैकुम। अब अच्छा लग रहा है, अब इंडिया में आए थे, इंडिया की ज़मीन छू गए, अभी अब बांग्लादेश उस बॉर्डर की ज़मीन छुएंगे। आप ये दोनों देश के एक रिश्ता जोड़ रहे हैं आपके थ्रू से। आप बिजनेसमैन है शायद, जो भी आप क्या करते हैं वैसे? नहीं, हम तो परदेश में रहता है, हम रहता है दुबई में। अभी हमारा बहन के साथ अभी मुलाकात नहीं हुआ, हमारा पूरा रिश्तेदार था, उन लोग के साथ मुलाकात नहीं हुआ। अभी तकरीबन 10 साल का बाद मुलाकात हुआ, इसलिए अभी रो रहा है उन लोग। लेकिन रिश्तेदार आया, पूरा आदमी तो पासपोर्ट से उससे नहीं आ सकता है इंडिया में, इसीलिए अभी उन लोग को रोना पड़ता है। बाकी जो आपके रिलेटिव है वहाँ पे भी रिलेटिव है, बिजनेस तो करते होंगे ना? बिजनेस तो करता है। बिजनेस तो कुछ नहीं है ऐसा, बस रिश्तेदार है, उन लोग के साथ मुलाकात करने के लिए आया है। बिजनेस कुछ नहीं है ऐसा। अभी हम लोग को लेने के लिए उन लोग आया, अभी 4 दिन पहले आया हम उन लोग का मिलने के लिए।
इसीलिए आया उन लोग को देखने के आपको लिए। कैसे कैसे भावना कैसा फीलिंग होता है? वो देखिए एक दूसरा कंट्री है, ये इंडिया है और ये जो बीच की जो दूरियां हैं, अब रो रहे थे, अभी दिखा मेरे को बहुत खराब लगा। अब फिर कैसा महसूस करते, क्या होना चाहिए ये रिश्ता नहीं, किस तरह से बेहतर कर आदमी के रिश्ता आदमी का रिश्ता अगर आदमी को जोश में शक्ल भी देखता है ना तो ऐसा बात नहीं कर सकता, दूर है बीच में ऐसा नदी था इसलिए बात नहीं कर सकता, लेकिन उन लोग को शक्ल देख के उन लोग को रोना पड़ता है, जो ये हमारा रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार है इसलिए। मैंने देखा अभी दूरबीन से देख के उनका रोया, हाँ। फोन से बात किया। हाँ। फोन कितना काम कर रहा है? नहीं, फोन से कैसे काम करता है, फोन से तो ऐसा बात सुनाई दे रहा है, लेकिन देखता नहीं आदमी को, ऐसा फोन बात नहीं सुन सकता, खाली कान में सुनाई देता है जो आदमी को बात खाली बस, लेकिन शक्ल तो नहीं दे सकता ऐसा, फिर रोता है बस ऐसा ही। जो भी हो इस तरह के जो भी हो रिलेशन बनते रहे, हम लोग प्यार के गीत गाते रहेंगे। हाँ। एक गीत गा देंगे हम बांग्ला के। हम सॉरी हम इसमें नहीं बोल सकता जो भी हो है। ओके Historically, the people of Northeast always enjoyed close cultural and economic ties with their neighbors. The natural flow of goods and transportation system through the cross-border trade had always been there. The recent Look East policy appears as a giant leap in the right direction. Even the geographical proximity has steered the spirit of people from our neighboring country for educational and other purposes of life. Most of the exports and imports of primary goods are formal, have been appended to the South Asian Preferential Trade Agreement in the year 1993. Bangladesh government has taken initiative for goods transshipment to Northeast India. The items coming into India are timber, fruit and vegetables. With these developments, the Northeast, with its locational advantage, could emerge as a business transit center for both the SAARC and ASEAN groups of nations. Northeast India has to identify a few well-defined trusted areas of production so that it can produce in excess of local demand. River trade points near Karimganj town is still active, and about 60 shiploads of coal were exported through that point.
অলপ আমাৰ আপোনালোকৰ প্ৰস্পেৰিটিৰ ওপৰত কথা পাতোঁ, হিউমেন ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত। हिंदी बोलबे, बांग्ला बोलबे, ठीक है। एक्चुअली हिंदी पढ़े ना, एक्चुअली आप लोगों से मिलके खुशी हुई। आप लोग एक्सपोर्टर है, राइट? सो आज यहाँ तट पे खड़े होके हम, ये नदी का नाम क्या है वैसे? कुशियारा नदी किनारे। दिस लाइक व्हाट डू, स्टीमर घाट है क्या ये? स्टीमर घाट तो नदी, उसका नाम स्टीमर घाट, नदी का नाम ये कुशियारा नदी। कुशियारा नदी, स्टीमर घाट। स्टीमर घाट ये जो है स्टीमर घाट है। करीमगंज, करीमगंज। वहाँ से कुछ नहीं होते? नहीं अभी नहीं कुछ। आता है कभी कभी कलकत्ता से सामान आता है तो यहाँ से होता है। ये लोकल बहुत चल ये रहा है। बहुत एक्सपोर्ट के लिए था। सो आप कितने सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो 2-3 साल होगा हमारा। कौन सा मेजर आइटम्स? जिंजर, ऑरेंज, जिंजर, ऑरेंज, जिंजर, ऑरेंज, साइट्रस, साइट्रस और बस ये इतने। कहाँ से होते हैं प्रोडक्ट? ये मिजोरम का आता है और श्रीलंका से आता है। ओके ओके। आप लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर कुछ लैंड खरीद के कुछ ग्रो करते हैं? नहीं वो मिजोरम से आया सब। यू बाय फ्रॉम द एग्रीकल्चर जो करते हैं ना, राइट? सो वैसे कितना टन जाते हैं वहाँ पे? वो तो 4 टन, 2 टन, 5 टन, 3 टन। जितना डिमांड रहता है उतना बेचते हैं। बांग्लादेश से जितना डिमांड देगा वो डिमांड मुताबिक माल देगा। तो आपका बिजनेस प्रॉस्पेरिटी ठीक ही चल रहा है? मोटा मोटी ये तो पूरा जैसे देख रहे हैं ना ये हालत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये रास्ते का प्रॉब्लम। उसमें कोई हम लोग का मतलब कस्टम का कोई ये घाट नहीं है। ये विसर्जन घाट है ना, ये दुर्गा जो विसर्जन होता है ये घाट को हम लोग यूज करते हैं। मेन कौन सा ऑफिशियल? ऑफिस ऑफिस तो इधर ही सब है। ऑफिस तो यही है, लेकिन आप लोग मिल के भी कुछ कर सकते हैं ना ये ऐसे? उसको वही तो जगह तो कस्टमर लैंड नहीं, ओके। तो कहाँ तो करेगा। अगर अच्छा एक रिश्ता बनाने के लिए और हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे कनेक्शन आप लोग का किस तरह से बात करते हैं वो तो बांग्लादेश? टेलीफोन से बात करें। टेलीफोन से, ठीक है। इंटरनेट वगैरह हाँ, फैसिलिटी इंटरनेट सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। एनीवेज आपसे मिलकर खुशी हुई। आपका बिजनेस जारी रहे और देश का रिलेशन, बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन बनता रहे आप लोग के थ्रू। आप लेको तो अच्छा से लेको जो वो तो जो पूरा रास्ता है ना वो इसको थोड़ा भी इम्प्रूव करने के लिए हाँ। आप लोग कम हम ये लोग करते हैं। एक्सपोर्ट लोग कितना कटना से ये बिजनेस करता है। ये डॉलर तो इंडिया गवर्नमेंट भी आता है। हम लोग सेम ही हम लोग को सेम वक्त ही इंडिपेंडेंस मिला। अभी रास्ता भी बनेगा। आप लोग का पहले, आप लोगों ने पहले रिश्ता बनाया, आप बिजनेस कर रहे हैं, रास्ता बनेगा, व्हाटएवर ब्रिज बनेगा, है ना? इट्स लाइक ठीक है। आप The लोग total export and import trade in the region has hovered around rupees 400 crore mark for the last few years because of the tremendous potential for international trade. With 500-kilometer international border, proximity to Southeast Asia, as presence of a large number of export and import points, the rich mineral deposit, fertile stretches of land with tremendous agroeconomic potential. In the history of human transmigration and transition, and in their survival, man has written so many stories of success and sorrow, peace and wars. Every civilization has taken place by riverside. The existing goodwill and amity will foment the scientific view in harmonious coexistence beyond the defined geographical areas. In the pattern of changing structure of economic scenario over the time, the integrative forces fostering universal values